the students of class 9th F are going to perform an e-assembly on the topic International Literacy Day. So, let's begin with Gayatri Mantra. Please join your hands and close your eyes for Gayatri Mantra. Thought of the day is one child, one teacher, one book and one pen can change the world. This means that every child should have an equality of opportunity to receive an education and every child has a right to learn of current and past world affairs just like Malala's story. Therefore, I repeat my thought. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Now Sambit and Alim are going to sing a song. सूरज है निकला हो रहा है अब उजाला आंखें खोलो हमको भी है लिखना पढ़ना हमको भी है आगे बढ़ना तुम भी बोलो शिक्षा का सूरज है निकला हो रहा है अब उजाला आंखें खोलो जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा है इतनी ही मजबूरियाँ शिक्षा मिटा देगी उन्नति की राहें शिक्षा दिखा देगी उम्र चाहे जो भी हो मैं कहूँ और तुम कहो हमको पढ़ना है आगे बढ़ना है हमको पढ़ना है आगे बढ़ना है शिक्षा का सूरज है निकला हो रहा है अब उजाला आंखें खोलो हमको भी है लिखना पढ़ना हमको भी है आगे बढ़ना तुम भी बोलो हमको पढ़ना है आगे बढ़ना है हमको पढ़ना है आगे बढ़ना है Number 8 marks the International Celebration and Awareness Campaign on Literacy. The holiday was declared by United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization (UNESCO) on this day in 1964. Today, 1 in 5 adults, around 796 million, lack in minimum literacy skills, 2/3 of them being women. The aim of this day is to highlight the importance of education to communities, individuals, and societies. As said by Nelson Mandela, education is the most powerful weapon with which we can win the world. नमस्कार, मेरा नाम ईशांत अग्रवाल है और आज मैं आपको शिक्षा के ऊपर एक कविता सुनाऊंगा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा,
चाहे हम कितना भी पढ़ ले, पर कभी ना पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, अफसर या शिक्षक, मंत्री, व्यापारी या साधारण सा रक्षक। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। धन्यवाद। कृपया प्रार्थना की स्थिति धारण करें। ओम भगवते नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम पृथिव्यां नमः। ओम मातृभूम्यै नमः। हे ईश्वर, हमारा आज का दिन सभी प्राणियों की भलाई की कामना करते हुए उन्नति के पथ पर अग्रसर हो।